Thank you very much. The time for this session is 1.5 hours. So since we started at 4:45, we'll be taking 15 minutes or so. So by 6:15, we hope to conclude this because there are cultural programs. Thank you very much. I request the chair to kindly take over the proceedings of this session. मंच पर उपस्थित आदरणीय भैरप्पा जी, ये मेरे लिए गर्व और गौरव की बात है कि आज मैं भैरप्पा जी, आवाज आ रही है? ये मेरे लिए गर्व और गौरव की बात है कि आज भैरप्पा जी हमारे साथ मंच पर है। बचपन से इनको पढ़ रहा था और कभी सोचता था कि इनसे भेंट होगी। कर्नाटक में रहते हैं, कभी मुलाकात नहीं हुई और आज उनकी अध्यक्षता में बोलने का अवसर है। मैं थोड़ा नर्वस हूं सर, लेकिन कोशिश करूंगा कि बोल लूं किसी तरह। आदरणीय सच्चिदानंद जोशी जी, मेरे मित्र विक्रम संपत जी, बालन जी और विश्वास पाटिल जी, बहुत युवावस्था में साहित्य अकादमी पुरस्कार 32 वर्ष में मिल गया था, जबकि हिंदी में तो आप लोग कहते हैं कि ये लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है। बहुत बुजुर्ग हो गए, दे दो, लेकिन सर आपको बहुत बधाई है, आपने 32 साल में ये प्राप्त कर लिया। आज और सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जन, आज का विषय स्वाधीनता संग्राम और साहित्य है। इस बीच अभी एक बहुत अच्छी बात घटी यहाँ, अच्छी भी कह सकते हैं उसको, थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा कि मराठी के लेखक का परिचय हिंदी में दिया गया और खाटी हिंदी बेल्ट के लेखक के बारे में अंग्रेजी में बताया गया। तो अच्छा होता कि हमारा परिचय मराठी में दिया जाता है। वो दिन भी आएगा हमारे सामने। तो अब मैं विषय पर आता हूं, स्वाधीनता संग्राम और साहित्य। स्वाधीनता के अमृत महोत्सव वर्ष में ये विषय कई बार हमारे सामने आया और इस पर कई बार बोलने का अवसर प्राप्त हुआ और हर बार ये चुनौती होती थी कि इसको कैसे अलग तरीके से प्रस्तुत करूं, क्योंकि कई गोष्ठियों और सेमिनारों में समान वक्ता और श्रोता भी होते हैं, आज भी है। तो अगर हम देखें, जब मैं इस विषय की तैयारी कर रहा था तो मुझे धुंध से उठती धुंध में निर्मल वर्मा की एक पंक्ति मिली जो मुझे बहुत सटीक लगी। वो पंक्ति है, साहित्य हमें पानी नहीं देता, वह सिर्फ हमें अपनी प्यास का बोध कराता है, परंतु जब तुम स्वप्न में पानी पीते हो तो जागने पर सहसा एहसास होता है कि तुम सचमुच कितने प्यासे थे। अब अगर हम निर्मल वर्मा के इस स्वप्न के बिंब को देखें और प्यास का जिस तरह से उन्होंने उपयोग किया अपने लेखन में,
तो मैं इस युद्ध के आधार पर आजादी की प्यास की तरफ आपको ले जाना चाहता हूं, क्योंकि भारत की परतंत्रता का जो कालखंड है वो पूरी दुनिया में सबसे अधिक है। कोई भी स्वाधीनता का आंदोलन इतना लंबा नहीं चला, कहीं भी देख लीजिए पूरी दुनिया में। तो भारत के लोगों पर जब परतंत्र हुए हम लोग, तो हमारा स्वाभिमान बहुत टूट गया, स्वाभिमान की कमी थी। और जब तक स्वाभिमान आपके अंदर नहीं होगा, स्वाधीनता का स्वप्न देखना बहुत मुश्किल काम था। और यही साहित्य की महती भूमिका थी कि उसने देश की जनता में स्वाभिमान जगाने का काम किया, देश की जनता को एक स्वप्न देखने के लिए स्वाभिमान की जमीन तैयार करने का काम हमारे साहित्य ने किया। 1206 से लेकर 1947 का इतना लंबा कालखंड हम परतंत्र रहे। आप समझ सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज स्वाधीनता सेनानी थे, उनको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा और किस तरह से लोगों के स्वाभिमान को जगाकर स्वाधीनता का स्वप्न देखने के लिए उनको तैयार करने में मशक्कत करनी पड़ी होगी। मेरे सामने जब मैं साहित्य को देखता हूं तो दो पैरेलल मेरे सामने, एक भक्ति आंदोलन, बहुत विद्वतापूर्ण सत्र अभी नीचे हुआ, नंद किशोर पांडे बैठे हुए हैं सभागार में शायद, और जी, तो मुझे दो पैरेलल दिखाई देते स्वाधीनता के पीरियड में साहित्य का, जिसके बारे में हमें विचार करना चाहिए। एक भक्ति काल और दूसरा 1206 में आक्रमणकारियों के साथ सूफियों का आगमन। इस दो पैरेलल को आपको देखना चाहिए। इतिहास की किताबें सूफियों के बारे में कुछ और कहती हैं और साहित्य की किताबें सूफियों को कभी मानती हैं। इतिहासकार मुजफ्फर आलम हो, अलबरनी हो, जो भी लोग हो, वो सूफियों को इस्लाम के प्रचारक के तौर पर देखते हैं और उसी आधार पर उनका मूल्यांकन करें। हिंदी साहित्य और जो भारतीय साहित्य बाद का, वो सूफियों को कवि की तरह देखता है। तो अगर हम अंतर दो विधाओं में आवाजाही करके इसका आकलन करते हैं, तो हमें एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाई देती है भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के बरक्स। इस पर मुझे लगता है कि साहित्य के अमृत महोत्सव काल में विचार किया जाना चाहिए। और जो मैं अभी उसकी बात कर रहा था, उसमें सूफियों के बारे में कहा गया है 11वीं शताब्दी में सूफी भारत आए और गजनवी के हमलों के साथ वो यहाँ आए और उनका काम था, वो सॉफ्ट पावर की तरह उसका इस्तेमाल किया गया सूफियों का। वो इस तरह से बनाते थे, अपनी संरचना रचते थे कि जिन इलाकों में तलवार से काम न हो वहां प्यार से काम, प्यार को हथियार बना के अपनी सत्ता को मजबूत करने का काम सूफियों ने किया। भक्ति आपके साथ मिलकर आपकी भाषा में आपकी चीजों पर बात करके वो उस तरह की रचनाएं जनता के सामने देते थे। और आज वो इस तरह घर कर गया है हमारे जनमानस में कि हम कहते हैं ये व्यक्ति तो बड़ा सूफी है, मतलब उसको हम संत के तौर पर देखते हैं। कोई अगर शराब नहीं पीता तो मजाक में लोग कहते हैं ये सूफी है। लेकिन अगर इतिहास के आधार पर सूफियों का मूल्यांकन हम करें तो वो इस्लाम के प्रचारक के तौर पर भारत में आए थे और उसी के आधार पर उन्होंने काम किया। ये मैं नहीं कह रहा, मुजफ्फर आलम की किताब है जिसको सुदीस पचौरी से लेके तमाम लोगों ने कोट किया। जरूरत इस बात की है कि इस पर नव्य इतिहासकार विचार करें। स्वाधीनता के अमृत महोत्सव का एक बहुत बड़ा काम या बहुत बड़ा जो कह सकते हैं कि कार्य ये हो सकता है कि हम इतिहास और साहित्य को मिलाकर देखें और फिर अपनी समग्र दृष्टि के साथ उस पर विचार करें। और भक्ति काल में देखिए तुलसीदास ने किस तरह से देश की जनता का स्वाभिमान जगाने का काम। इस पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी किसी भी कवि की रचना या उसका ग्रंथ अगर लाल कपड़े में लपेटकर पूजा या उपासना स्थल पर रख दिया जाए तो उस कवि की सफलता और उस कवि का जनता से कनेक्ट कितना तगड़ा होगा, इस बात की कल्पना की जा सकती है।
उनको भक्ति और ईश्वर से जोड़कर नहीं, उनको जनता से जोड़कर देखे जाने की आवश्यकता है। तो ये इन दो पैरेलल को देखता हूं मैं, तो मुझे लगता है जो भक्ति आंदोलन या भक्ति कवि थे, उन्होंने देश की जनता का स्वाभिमान जगाने का काम किया और उन्होंने जो आधार तैयार किया उसके ही बूते पर बाद में स्वाधीनता का स्वप्न देखा गया। और बाद के दिनों में बहुत सारे साहित्यकार इस पर काम करते नजर आते हैं। बड़ी लंबी परंपरा है और तो बहुत सारे साहित्यकार हमारे सामने हैं जिन्होंने स्वाधीनता पर लिखा। जैसे अगर हम राम की शक्ति पूजा निराला की कविता को देखते हैं तो राम की शक्ति पूजा में भी स्वाधीनता का जयघोष। और अगर आप राम की शक्ति पूजा की पंक्तियों की तुलना उस कालखंड में घट रही घटनाओं से करते हैं तो देखिए क्या करते हैं। एक जगह शक्ति की करो मौलिक कामना, करो पूजा, छोड़ दो समर, जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। इस आधार पर निराला ने स्वाधीनता का स्वप्न देखा और वो एक मौलिक कल्पना की बात है। तो इन सब चीजों को देखें। या प्रेमचंद का किसान जब मजदूर हो रहा होता है तो उसका पैरेलल आपको गांधी के सत्याग्रह में दिखाई देता है। इन सब चीजों पर अगर हम विचार करेंगे तो राम की शक्ति पूजा में निराला कहते हैं कि रावण का मरना लोकहित में, लोकहित की बात उस कालखंड के कवियों में होती है। लेकिन यहां भी एक आपको चीज दिखाई देगी कि 1920 के दौर में भारत में साम्यवादी साहित्य बहुतायत में प्रकाशित हुआ हिंदी में, और उसको सिर्फ छपा ही नहीं बांटा भी गया। और वो जो साम्यवाद की अवधारणा थी वो स्वाधीनता को लेकर सशंकित रहती थी, क्योंकि वो किसी देश में यकीन नहीं करते। उनका मानना, उनके लेखकों का मानना कि समूचा विश्व एक है। हम वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना जरूर करते हैं लेकिन राष्ट्र भी हमारे यहाँ उतना ही महत्वपूर्ण है। तो 1900 जो पैरेलल हमें भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में दिखाई देता है वही 1920 के दौर में भी दिखाई देता है, जब इस देश में अचानक से प्रगति प्रकाशन, राधिका प्रकाशन और तमाम तरह के प्रकाशकों की पुस्तकें ठेल दी जाती है। उसका आकलन भी अब तक नहीं हुआ है कि किस आधार पर वो सारी चीजें भारत में प्रस्तुत की गई। और स्वाधीनता आंदोलन पर, क्योंकि इतिहास भी वामपंथियों ने लिखा, इतिहास भी मार्क्सवादियों ने लिखा और अपने दर्शन के हिसाब से उन्होंने इन तथ्यों को जनता के सामने आने से रोका। बहुत सुविधाजनक तरीके से हिंदी में जिस तरह से सूफियों को कभी बता दिया, राष्ट्रभक्ति से जोड़ दिया गया, जबकि इसमें काम करने की आवश्यकता है। और स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के समय इस कालखंड में, या जो अमृत काल कहा जा रहा है इस वक्त, अमृत काल में इन चीजों पर विचार किया जाना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त की भारत दुर्दशा भी लोगों को याद होगी। भारत दुर्दशा में भी वही दिखाई देता है। या 14 फरवरी 1922 को माखनलाल चतुर्वेदी की रचना जहां नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं, ये अगर देखें तो उसमें भी किस तरह से स्वाधीनता की छटपटाहट दिखाई देती है। तो हमारे साहित्य को इस तरह से देखें कि स्वाभिमान पूरा हुआ, स्वाधीनता पूरा हुआ और अब साहित्य को देश के स्वावलंबन की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। And my friends in the auditorium and the distinguished panelists. It's my great pleasure and indeed a privilege to be here in this mega international festival on literature.
In fact, when I received the invitation, I sent a message to Sahitya Academy saying that this seems like the Kumbh Mela of literature. And I also told her, please take care of me so that I'm not lost in it. So I thank you very much, Sahitya Academy and the Ministry of Culture, for this opportunity to share with you some of the thoughts on the freedom movement. Before that, I would like to record my sincere thanks and appreciation to the staffs of Sahitya Academy who have worked day and night to put this show. Many of them have not slept properly for days. Many of them have not taken food for days properly. And it is their hard work and tireless effort that has given us this privilege. And I thank them from my bottom of the heart. Going through the checkered annals of the history of Indian literature, one can easily find before the dawn of independence movement, Indian literature was inclined towards religion and mythology. Be it a Vaishnava Vadavalis of Bengal or Chhatrapatis of Assamese or Yadadipika of Marathi or Kotaraka Kavirans Ramanathanam of Malayalam. 18th century Indian literature was predominantly religious. Meenakshi Sundaram Pillai, a Tamil scholar of the period 1815 to 1876, who taught Tamil at one of the Saiva monasteries, wrote more than 80 books consisting of 200,000 poems. Ramalinga Adigal of the period 1823 to 1874 wrote a devotional poem Thiruvaruppa. It was the independence movement that swayed literature towards nationalism. The early proponents of nationalism were newspapers and journalism and not literature. It may be recalled that during the period between 1718 and 1826, the freedom movement was predominantly a movement for the freedom of propagation of a nascent political ideology, nationalism. It is neither an astonishing coincidence nor a historical accident that almost all the leaders of the freedom movement were journalists. Shunning away the modesty, I would like to rephrase this sentence as most of our pioneer journalists were the leaders of the freedom movement. Yes, freedom movement all over the country were led by journalists. Even before political movements were born in India. This is not a tall clan made out of fraternal affinity. Dadabhai Naoroji was the founder of Rajgurfa. Bal Gangadhar Tilak was the founder of Keshri and Maratha. Gopalakrishna Gokhale was the founder of Hidatva. Aravinda Ghosh was the editor of Vande Mataram. G. Subramania Iyer was the founder of the Hindu and Swadesh Mitra. Subramania Bharati was the editor of India. Annie Besant was the editor of Home Rule. Lajpat Rai was the founder of Punjabi, Vande Mataram, and the editor of People. Mahatma Gandhi was the editor and founder of Young India, Navajivan, Harijan. Madan Mohan Malviya was the founder of Hindustan Times.
Jawaharlal Nehru was the founder of National Crowd. Abul Kalam Azad was the founder of Vakil. Chakravarti Rajagopalachari was the founder and editor of Emotional. And these are a few familiar names that we had come across in our school textbooks. But there are many unsung and unknown martyrs. When newspapers flourished, British rulers responded to them with more draconian laws like the Vernacular Press Act of 1878. When laws pertaining to publishing news became more strident, journalists devised various other creative ways to circumvent it. They took to creativity. Subramanya Bharati, editor of India, Maulana Abul Kalam Azad, founder of Vakil, Sri Rajagopalachari, founder of Vimochanam, Girish Chandra Ghosh, editor of Hindi Patriot, are few names to recall. Not just in Tamil, but almost all Indian languages. The nature of patriotic literature was determined by its need. Freedom movements needed powerful freedom literature, not just to evoke emotions, but to help people envision what liberty is and what it costs in terms of self-sacrifice. Unlike political rhetoric and newspaper journalism, literature can hold up an inspiring image of freedom, and people may feel around and can realize and relate to. As epics inspired bhakti for generations, literature during the independence movement dramatized ideals and values for which a country would strive in political arena. Subramanya Bharati was a pioneer in spearheading the vision of independent India. Who is celebrated today as a Mahakavi and as a literary genius. He was espousing the cause of freedom and believed that unless we mobilize public opinion in favor of the movement, in favor of freedom, and involve the masses in struggles against British, India's freedom will be a far cry. In order to achieve this objective, he devised various formats and delivered the message in various genres, namely poems, lyrics, fiction, essays, and cartoons. Bharati had a strong conviction that if a message has to reach out to the mass, then the medium that carries the message needs to be facade. He demonstrated this conviction in whatever he did, be it his poetry, prose, or journalism. He broke the rigidity of the Tamil prose, hardened by puritanical grammar pundits, and made them simple enough for the less educated to grasp what is written. He said some of his poems to the tunes of folklore so that common people can sing them at the festivals. He modeled a few of them like the beats of marching troops. He wrote poems on the issues like partition of Bengal, on leaders like Tilak, Vivosi, Gandhi. He utilized historical heroes like Chhatrapati Shivaji and Guru Gobind Singh, and translated Bankim Chandram Ademanan. He depicted living sages of his time like T. Subramania, Ishwar Chandra Vidyasagar, Lala Lajpat Rai, and Veerasalingam Bandlu as characters in his fiction. Gandhi, after 2 decades after Bharati's death, when he was giving the clarion call for the Quit India movement,
echoed Bharati's concept of freedom. Bharati was advocating for freedom. Bharati was advocating for freedom from fear, and he firmly believed that it is the prime cause of all our mistakes. He wrote, Achamillai, Amungudaillai, Nadungudallai, Nanudallai, Pavamillai, Adungudallai, Yeda Nerinum Idapadamattom, Andam Sidrinal Anjamatom, Kadalbungi Edindal Kalangamatom, Yarukum Manjom, Yedarkum Manjom, Yengum Manjom, Yapuril Manjom. It means we don't fear, shrink, or shiver, or get timid. We don't sin or run away. We won't suffer for what we do. We won't fear anyone, anything, anywhere. We never fear. Gandhi resonated with the same spirit when he heralded the Quit India movement in 1942. Gandhi said, every one of you should, from this moment onwards, consider yourself a free man or woman and act as if you are free and no longer under the heel of imperialism. It is not a make-believe situation that I am suggesting to you. It is the very essence of freedom. The bond of the slave is snapped at the moment. The bond of the slave is snapped the moment he considers himself to be a free being. He will plainly tell the master, I was your bond slave till this moment, but I am not a slave no longer. This is a classic example of the symbiotic relationship between literature and the independence movement. The freedom movement, literature was nurtured itself with the ideas and aspirations represented in literature. And the literature drew its inspiration from the leaders and as heroes. Gandhi himself was one such hero who inspired many writers across the Indian languages. Despite being a prolific writer, amidst his political and social activism, Gandhi did not produce any creative work during his 79 years of life. Yet, he is a catalyst to a multitude of writers, both in India and abroad. There were few iconic leaders who were remembered, celebrated, debated, criticized like him in literature. Every renowned writer has something to say about him. Writings on Gandhi by foreign writers like Roland Roman of France, Edmund Jones of America, George Well of Britain, Ellen Hock of Denmark, Paulus Buck are the backs of either admiration or criticism. They were onlookers and not participants. Unlike the Western masters, as the roots of Indian writers were embedded in their native soil, they were drawn more closely to Gandhi, both to his both to his personality and philosophy. For them, Gandhi symbolized the common man, his aspirations, and his hopes. Though their response to his philosophy varied from writer to writer, depending on the personality traits, it spurred them into action. Be it C. Rajagopalachari, Shriram Karant, Vaikam Bashir, the celebrated writers from South didn't restrict themselves to the words but plunged into action. Bashir was 16, an impressionable age when Gandhi visited Vaikam in 1924 to participate in Satyagraha.
He was already drawn into the nationalist movement by then, but Gandhi's visit galvanized it. It is not difficult to sense his excitement over the meeting, which is embedded in the lines, "Uma, I touched Gandhi," when he says proudly to his mother. This story, Amma, which is a fragment of his autobiography, in the autobiography in the short story form, written in 1927, is a record of the times and the work of a patriot drawn towards Gandhi. Shivram Karan, a colossus of Kannada literature, like many men of his times, were drawn towards Gandhi when he was in college. The non-cooperation movement inspired him to leave his degree halfway and take to the promotion of spinning. When he was in his 20s, Karan started a correspondence with Gandhi. Though we don't have his side of the exchange, from the letters printed in the collected works of Mahatma Gandhi, we get a bare idea of what was on Karan's mind. In response to one of the Karan's questions, Gandhi assured him that to promote widow marriage as a concession to promote widow marriage was nothing to do with this. It's not inconsistent with brahmacharya. Still, he saw it as a concession to human frailty. When I advocate the marriage of child widows, I presume that they want the pleasure which all animals seek, and some human beings only can restrain themselves from seeking, Gandhi wrote. Karan rejected Gandhi's view that brahmacharya is superior to a married life, but continued to promote Khadi and Swadeshi for about 5 years till 1927. Gandhian thoughts in Tamil, both in fictional form and through journals, were spearheaded by his conscious keeper, C. Rajagopalachari, more popularly known as Rajaji. This former Governor General is revered as one of the good short story writers of the early era. He has 3 short story collections and was a Sahitya Akademi awardee. He was the first chief minister to introduce prohibition in Tamil Nadu. And he was the first chief minister to introduce prohibition in Tamil Nadu, and it is no surprise that his stories propagate against the evils of liquor, one of the concepts close to Gandhi's heart. Creative writings on Gandhi in Indian languages can broadly be classified into 3 categories. Works espousing the Gandhian values directly or indirectly. Fiction with protagonists influenced by Gandhi philosophy or programs. Gandhi himself appearing as a character. I am not going to give a survey or catalog of these works as the list is long and the time is shorter. But I would like to end with a question which every one of us ponder. The question that stares us today is, what is the relevance of national literature today? The features that make a literary work are great. Literary work great are 2. 1, great literature in any language around the world is created over permanent sentiments. And those places and those pieces have universal appeal and are not bound by time or geographical or cultural limitations. On the contrary, nationalist literature is based on permanent sentiments like, are not based on permanent sentiments like love, anger, pathos, or humor. They are pitched on
subordinate sentiments that are evolved through group feelings, territorial attractions, and cultural consciousness of a particular group or people of country. It makes nationalist literature ephemeral. George Orwell writes in Notes on Nationalism. Nationalism is inseparable from desire for power. The abiding purpose of every nationalist is to secure more power and more prestige, not for himself, but for the nation or the other unit in which he has chosen to sink his own individuality. Free India needs more such nationalist literature than colonial India. And Amit Mahosab could be a trigger to promote such literature. Thank you. भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित और साहित्य अकादमी द्वारा प्रबंधित इस 3 दिवसीय साहित्य महोत्सव उन्मेष की इस अत्यंत महत्वपूर्ण सत्र के सम्मानीय अध्यक्ष श्रद्धेय SL भैरप्पा जी, मंच पर उपस्थित श्री अनंत विजय जी, श्री मालन जी, श्री विक्रम संपत जी, श्री विश्वास पाटिल जी, सभागार में उपस्थित साहित्य अकादमी के अध्यक्ष आदरणीय श्री चंद्रशेखर कंबार जी, भूतपूर्व राज्यपाल माननीय श्री राम नाईक जी और सभी सम्मानित देवियों सज्जनों, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इस सत्र में मुझे अपनी बात कहने का अवसर मिला है। जब मैं इस सत्र की योजना के बारे में देख रहा था तो एक बहुत रोचक बात ध्यान में आई कि लगभग इसी विषय पर 3 समानांतर सत्र इसी समय पे चल रहे हैं। इस सत्र का विषय है लिटरेचर इन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, जबकि एक और सत्र हो रहा है जिसका विषय है मीडिया, साहित्य और स्वाधीनता आंदोलन, और टाउन हॉल में तीसरा सत्र हो रहा है जिसका विषय है स्वाधीनता आंदोलन और पुस्तकों की भूमिका। मेरे विचार से ये तीनों सत्रों का विषय कुल मिलाकर एक जैसा ही है और इसलिए इसमें कहीं बहुत अधिक विभेद करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिस काल की हम बात कर रहे हैं उस काल में समूचे साहित्य को या समूचे कृतित्व को या समूचे रचनात्मक कृतित्व को अलग अलग खानों में बांटकर नहीं देखा जाता था। वही पत्रकारिता भी थी, वही साहित्य भी था और वही कुछ समय तक मीडिया भी था, क्योंकि वे सब एक उद्देश्य के लिए, एक समान उद्देश्य के लिए लड़ रहे थे और वो था भारत की स्वाधीनता। और इसलिए विचारों में एकता थी, संवाद में एकता थी, कृति में एकता थी और उद्देश्य सिर्फ एक था कि कैसे हम भारत के समूचे समाज को जागृत कर सकते हैं ताकि वो भारत की स्वाधीनता की लड़ाई में जाए। अभी अनंत विजय जी ने बहुत सुंदर भक्ति आंदोलन का उदाहरण दिया था और इस बात को मैं वहां से इसलिए शुरू कर रहा हूं कि दरअसल भक्ति आंदोलन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान भारत के स्वाधीनता आंदोलन में इसलिए है कि जब भारत का अधिकांश भाग जब बहुत अधिक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और बहुत अधिक भारतीयों का मनोबल तोड़ने की कोशिशें हो रही थी विदेशी शक्तियों द्वारा, सिर्फ ये बताते हुए कि आपका अपना कोई सत्व नहीं है, आपकी कोई संस्कृति नहीं है, आपकी सभ्यता का कोई मूल्य नहीं है, उस वक्त भारतीय समाज के अंदर चेतना जगाने का, आत्मविश्वास जगाने का, आत्मबोध जगाने का महत्वपूर्ण काम भक्ति आंदोलन ने किया। और इसलिए वो साधु संत समाज जो सिर्फ लुकाटी लेकर पूरा घर फूंक कर समाज को जागृत करने निकले थे, दरअसल उन्होंने भारत के स्वाधीनता आंदोलन की नींव रखी है। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, जो लोग इतिहास के जानते हैं वो जानते होंगे कि जब
18वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी के बाद जब स्वाधीनता की आंदोलन की शुरुआत हुई, तब सन्यासियों का विद्रोह था जिसने सबसे पहले भारत में स्वाधीनता का अलग जगाया। और इसलिए आज जब हम एक अलग किस्म के नैरेटिव की बात कहते हैं तो बहुत दुख होता है ये कहने के लिए कि शायद हम उस नैरेटिव में कहीं ना कहीं भारत की उस स्वाधीनता के अलग को भूल जाते हैं, उस स्वाधीनता की उस अलग को देखना भूल जाते हैं। एक और बात मैं कहना चाहता था, और जो बात मैं कहना चाहता हूं वो मैं कविता के माध्यम से कहना चाहता हूं, इसलिए दो कविताएं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अभी जब मालन साहब सुब्रमण्यम भारती जी का जिक्र कर रहे थे तब मुझे ध्यान आया कि मेरे सामने दो कविताएं हैं, एक दक्षिण के सुब्रमण्यम भारती की है और एक उत्तर के मैथिली शरण गुप्त की है। ये दोनों रचनाएं लगभग 20-30 साल के अंतर में ही, मेरे ख्याल से उससे कम के अंतर में, लेकिन मैंने विवादों से बचने के लिए 20-30 साल का फ्री बोर्ड दे दिया है। सुब्रमण्यम भारती की कविता जिसका मैं हिंदी में अनुवाद पढ़ रहा हूं। चमक रहा उत्तुंग शिखर पर यह नगराज हमारा ही है, जोड़ नहीं धरती पर जिसका वो नगराज हमारा ही है। नदी हमारी ही है गंगा, प्लावित करती मधुरस धारा, बहती है क्या कहीं और कहीं ऐसी कलकल पावन धारा। सम्मानित जो सकल विश्व में महिमा जिसकी बहुत रही है, अमर ग्रंथ वे सभी हमारे, उपनिषदों का देश यही है। गाएंगे हम सब यश इसका, यह है स्वर्णिम देश हमारा। आगे कौन जगत में हमसे, यह है भारत देश हमारा। यह है भारत देश हमारा, महारथी कई हुए जहां पर, यह है देश मही का स्वर्णिम, ऋषियों ने तब किए जहां पर। यह है देश जहां नारद के गूंजे मधुमय गान कवि थे, यह है जहां पर बनते सर्वोत्तम सामान कवि थे। यह है देश हमारा भारत, पूर्ण ज्ञान का शुभ्र निकेतन। यह है देश जहां पर बरसी बुद्ध देव की करुणा चेतन, है महान अति भव्य पुरातन, गूंजेगा यह गान हमारा। है क्या हमसे कोई जगत में, यह है भारत देश हमारा। ये सुब्रमण्यम भारती कहते हैं 1912 के आसपास। और उसी समय राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त भी कहते हैं। ये दोनों राष्ट्रकवि हैं, एक उत्तर के एक दक्षिण के हैं। आज हम संचार के सारे संसाधनों के बावजूद समन्वय की बात कर रहे हैं, तालमेल की बात कर रहे हैं, उत्तर दक्षिण के बीच तालमेल की बात कर रहे हैं। वहां तब संचार भी नहीं था, समन्वय भी नहीं था, और पूरे के पूरे समय में ब्रिटिश हुकूमत का पहरा था। फिर भी भारत की रचनात्मक मेधा में इतनी शक्ति थी, इतनी क्षमता थी, इतनी आस्था थी कि वो ऐसा सृजन कर सके। और उसी समय मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद जहां, सबका शिव कल्याण यहाँ है। पावे सभी प्रसाद यहाँ, जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ। सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सम्मान यहाँ। राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ। भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का ध्यान यहाँ। सब तीर्थों का तीर्थ यह, हृदय पवित्र बना ले हम। आओ यहाँ आजाद शत्रु बन, सबको मित्र बना ले हम। दिखाएं प्रस्तुत हैं अपने मन के चित्र बन हम। 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले। ये जो एक चरित्र बना ले, इसकी बात कही। और इसलिए जब हम भारत के स्वाधीनता संग्राम में साहित्य की भूमिका की बात करते हैं, भारत के स्वाधीनता संग्राम मीडिया की भूमिका की बात करते हैं, भारत के स्वाधीनता संग्राम में पुस्तकों की भूमिका की बात करते हैं, तो सब मिलाकर, कुल मिलाकर हमको निचोड़ यही समझ में आता है कि ये भारत की रचनात्मक मेधाई थी, ये भारत की कृतिशील मेधाई थी, जिसने भारतीयों के मनोबल को हमेशा ऊंचा रखा है। नहीं तो लॉर्ड मैकाले जैसों ने भारतीयों का मनोबल तोड़ने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। 1835 का जो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया है, जिसके बारे में हम हाल में बहुत ज्यादा बात करने लगे हैं जब से हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, कि मैकाले ने जब 1835 एजुकेशन एक्ट लाया तो उसका मूल तत्व यही था कि वो भारतीयों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए, भारतीयों के अंदर एक आत्मग्लानि का, आत्महीनता का भाव उत्पन्न करे। उन्होंने बताया कि आपकी संस्कृति में, आपकी सभ्यता में, आपकी वैचारिक मेधा में कोई दम नहीं है। और इसीलिए उस समय ये अगर साहित्यकार, ये तमाम बुद्धिजीवी अपना कर्म न निभा रहे होते तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि भारत की क्या दशा होती। और आपने बहुत सही कहा मालन साहब कि निश्चित तौर पर ये कोई खांचा नहीं था कि कौन साहित्य, कौन राजनेता है। हम तमाम लोगों को देखते हैं कि वो सबने अपने अपने समय में श्रेष्ठतम अखबार निकाल के अपनी भावनाओं को जन जन तक पहुंचाने की चेष्टा की है।
और मैं बहुत अधिक विस्तार में इस विषय को इसलिए नहीं कहूंगा कि मेरे पूर्व वक्ता ने बहुत सुंदर ढंग से सारी बात कही है, लेकिन 2 तिथियों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता था कि पुनरावृत्ति के दोष से बचूं। आज 17 जून है, कल 18 जून है। 18 जून 1951 एक महत्वपूर्ण तिथि है। 1800 जून 1951 एक महत्वपूर्ण तिथि इसलिए है कि 1800 जून 1951 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले संविधान संशोधन पर हस्ताक्षर, और वो पहला संविधान संशोधन इसलिए महत्वपूर्ण है कि उस पहले संविधान संशोधन में राजद्रोह की भी बात कही गई थी, जिसकी चर्चा इन दिनों हो रही है। वो राजद्रोह की बात मैं यहाँ इसलिए करना चाहता हूँ, वो जो राजद्रोह का कानून था जो 124 था, उस राजद्रोह के कानून में भारत के कई महान नेता जेल गए, और ये तमाम महान नेता इसलिए जेल गए क्योंकि उनका लेखन, उनका बोलना, उनके विचार कहीं न कहीं ये माने गए कि ये देश के खिलाफ है। हमें याद होगा वही लॉर्ड मेकाले जिसका मैं यहाँ उल्लेख कर रहा था, उन्हीं लॉर्ड मेकाले को ये काम दिया गया था और उन्होंने 1837 में राजद्रोह के कानून को बना लिया था। लेकिन उन्होंने कानून बना लिया, तब तक वो लागू नहीं हुआ। जब इंडियन पीनल कोड भी आया 1860 में, तभी उसे लागू नहीं किया गया। लेकिन 1870 में जेम्स स्टीफन ने उसे लागू किया, ये सोचते हुए कि भारतीयों के मनोबल अब बहुत अधिक बढ़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी इस वैचारिक आंदोलन को, उनके इस भावनात्मक आंदोलन को कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा, और उसको रोकने के लिए उन्होंने राजद्रोह का कानून लाया। 1892 में योगेश चंद्र बसु वो पहले भारतीय संपादक थे जिन्हें राजद्रोह के कानून में गिरफ्तारी देना पड़ी थी, क्योंकि बंगवासी नामक कोई लेख लिखा था। यहाँ अप्रासंगिक नहीं होगा एक बताना कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक वे राजनेता थे जो राजद्रोह के कानून में 3 बार पकड़े गए थे और उन्हें 3 बार अदालत का सामना करना पड़ा था। 1808 में जब उनके ऊपर राजद्रोह का कानून लगा था तो उनका केस जिंदा में पड़ा। तब उन्होंने बायकॉट और स्वदेशी आंदोलन की तुलना करते हुए एक लेख लिखा था। उसके साथ ही उन्होंने मुजफ्फरपुर में हो रहे बम के हमले के ऊपर जो ब्रिटिश हुकूमत की कार्रवाई थी उसके खिलाफ लेख लिखा था, और इसके लिए उनको 6 साल की जेल हुई थी, हम सब जानते हैं। और सिर्फ लोकमान्य तिलक ही नहीं है, लोकमान्य तिलक के अलावा महात्मा गांधी 1922 में राजद्रोह के कानून में पकड़े गए थे, जवाहरलाल नेहरू कई बार राजद्रोह के कानून में गए, मौलाना आजाद कई बार राजद्रोह के कानून में गए, वीर सावरकर कई बार राजद्रोह के कानून में गए। ये राजद्रोह के कानून में क्यों गए? इसलिए गए क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी विचारिक क्षमता को, अपनी बौद्धिक भूमि के लिए जो उसको सामान्य रूप से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया, न सिर्फ प्रयास किया बल्कि पुरजोर ढंग से उसे लोगों तक पहुंचाया। और जब उन्होंने पुरजोर ढंग से लोगों तक पहुंचाया तो निश्चित तौर पर ब्रिटिश हुकूमत में खलबली मच गई, और इस खलबली के कारण ही हमारे तमाम नेताओं को उस राजद्रोह के लिए गिरफ्तारी देनी पड़ी। इसलिए मित्रों, जब मैं 18 जून 1951 की बात करता हूं तो वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब भारत आजाद हुआ तो भारत के संविधान में उस बात की कहीं जिक्र नहीं था, उस बात की कहीं चर्चा नहीं थी। पंडित नेहरू के भी मन में ये प्रश्न था कि इसे शामिल किया जाए या न किया जाए। श्री राम बहादुर राय की पुस्तक है भारतीय संविधान अनकही कहानी। मेरा आपसे आग्रह होगा कि आप में से जिन्होंने नहीं पढ़ी पुस्तक आप अवश्य पढ़ें। भारतीय संविधान के ऊपर हिंदी में कम से कम इतनी शोधपरक पुस्तक आज तक देखने को नहीं मिली है। और उसी के संदर्भ से मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बहुत भारी मन से इस संविधान संशोधन पर हस्ताक्षर किए थे, क्योंकि उनके मन में था कि ये संविधान संशोधन इसलिए अनैतिक है, इलीगल है, क्योंकि एक तो इसे दोनों सदनों से पास नहीं किया गया है, क्योंकि हम जानते हैं 1951 में राज्यसभा बनी नहीं थी, और दूसरी बात ये थी 1951 में जो लोकसभा थी वो निर्वाचित लोकसभा नहीं थी। इसके बावजूद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने हस्ताक्षर उस राजद्रोह के कानून पर किए हैं, और जो ऐतिहासिक संदर्भ आपको ये बताता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू मई के महीने में राजद्रोह कानून का विरोध कर रहे थे, इतिहास में शायद खंगाल के देख लेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वही जवाहरलाल नेहरू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर दबाव बना रहे थे कि वे इस संशोधन पर हस्ताक्षर।
और ये संशोधन इतना एग्जॉस्टिव संशोधन है कि शायद जो आपातकाल के समय संविधान का संशोधन हुआ है शायद वो भी इतना एग्जॉस्टिव नहीं था। सोचने की बात ये भी है कि जब भारत ने 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान अंगीकृत किया था तो एक साल के अंदर ही इतनी क्या जरूरत आन पड़ी कि संविधान में आपको इतना एग्जॉस्टिव संशोधन करना पड़ा। मैं ये दो तुलनाएं आपके सामने सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि यही वो नेता थे, यही वो लोग थे जो ब्रिटिश हुकूमत के अपनी वैचारिक अभिव्यक्ति के कारण राजद्रोह का कानून बोलते हैं, और वही हैं जो भारत के आजाद होने के बाद कहीं न कहीं इस कानून के प्रति समर्थन में खड़े होने की चेष्टा करते हैं। आज की तिथि का एक और महत्व है, वो बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आज 17 जून है। 19 जून को उस महामना का जन्मदिन है और उनके जन्म की 151वां जन्म दिवस है। इनका नाम है पंडित माधवराव सप्रे। पंडित माधवराव सप्रे वे पत्रकार थे, वे हिंदी के पहले संपादक थे जिन्हें 124 अ के तहत राजद्रोह कानून में कैद हुई और उन्हें कारावास भुगतना पड़ा। आज जब हम भारत की साहित्यिक मेधा के योगदान की, भारत की स्वतंत्रता संग्राम में भारत की साहित्यिक मेधा के योगदान की चर्चा करते हैं तो मुझे लगता है मैं पंडित माधवराव सप्रे जैसे ऐसे अनेक महामनाओं का स्मरण निश्चित तौर पर करना चाहिए जो उतनी प्रसिद्धि नहीं पा सके जितनी प्रसिद्धि या पंडित जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी या लोकमान्य तिलक ने प्राप्त की है। लेकिन उनका संघर्ष अपने आप में बहुत अद्भुत और बहुत अकल्पनीय रहा है, क्योंकि पंडित माधवराव सप्रे ने हिंदी केसरी निकालकर लोकमान्य तिलक की मराठी केसरी की आवाज को पूरे देश में पहुंचाने का प्रयास किया, और इसीलिए हिंदी केसरी में उनके छपे लेख और भारतीय ग्रंथमाला में छपे उनके लेख के कारण अंग्रेजी हुकूमत को लगा कि शायद ये सारे लेख भारतीयों के मन में और ब्रिटिश हुकूमत में खलबली मचाने वाले हैं, और इसीलिए उन्हें राजद्रोह कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। मित्रों, आज जब हम भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं, आज जब हम अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का गुणगान करते हुए यत्र तत्र सर्वत्र उसका अहंकार भरा ढोल पीटने की चेष्टा कर रहे हैं, हमें इस बात पर भी सोचना होगा कि ये जो अभिव्यक्ति की आजादी है इसके क्या होने चाहिए, इसके पैरामीटर्स क्या होने चाहिए। और उसमें हमें ये भी सोचना होगा कि जब हम इस तरह की बात करते हैं तो अभिव्यक्ति की आजादी के इर्द गिर्द साहित्यकारों की, रचनाकारों की, उन सभी की जो समाज में कहीं न कहीं प्रेरणा पहुंचाने का काम करते हैं, चेतना पहुंचाने का काम करते हैं, उनका दायित्व क्या है। कठिन समय है। कठिन समय इसलिए भी है कि आज मीडिया ने भी अपने मायने बदले हैं। मैं और अनंत जी जैसे लोग मीडिया की पृष्ठभूमि से आते हैं तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जिस मीडिया को आप सन 1900 या सन 1947 में देखते थे वैसा मीडिया आज नहीं है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे ऐसे अनौपचारिक प्लेटफॉर्म्स खुल गए हैं जहां पर आप अभिव्यक्ति के नाम पर कोई भी अनाचार कर सकते हैं। दुख की बात यह है कि वे सारी चीजें कहाँ राष्ट्र हित में है और कहाँ राष्ट्र के विरोध में है, इसकी पड़ताल करना भारत के बुद्धिजीवी समाज के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं आह्वान करता हूँ, ये जो बुद्धिजीवी समाज यहाँ बैठा है, और निश्चित तौर पर मैं इस मौके का उपयोग इसलिए करना चाहता हूँ ताकि मैं आपसे विनम्र अनुरोध कर सकूं कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर चल रहे अनाचार को, राष्ट्र विरोधी अनाचार को कहीं न कहीं हम रोकने की कोशिश करें, उस पर लगाम देने की कोशिश करें। तभी हम समझेंगे कि आने वाले और 75 साल भारत में उस अभिव्यक्ति की आजादी को अक्षुण्य रखा जा सकेगा, चिरंतन रखा जा सकेगा, शाश्वत रखा जा सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Respected Bhagavaji, respected co-panelists on the dais, eminent dignitaries in the audience, ladies and gentlemen, a very good evening to all of you. It's indeed a great honor, a pleasure, a privilege to be part of this Sahityotsav, which the Sahitya Academy and the Ministry of Culture has organized, and I convey my thanks to them for inviting me here. As someone who comes from Karnataka, I have read most of Bhairappaji's books in the original in Kannada,
And so it is a fanboy moment for me to be seated on the same dais as he is on this evening. Now we are talking today about literature and Indian independence movement. I would like to take a slightly different track and actually investigate what this independence movement actually was. Was there only one independence movement, as is told to us in our history books and in the popular narrative? The non-violent struggle, which was the mainstream freedom struggle that this country endured for several decades. Of course, that was the most important stream of our freedom movement. But alongside, there was a constant Sashastra Kranti ki ek aviral dhara, a non-stop flowing ocean of armed resistance that this country also presented. It never flagged down, right from 1857, which we call the first war of our independence, till 1946, which we still unfortunately call as the naval mutiny. We don't call it as the last war of our independence. Till this entire time period, every part of India, there was some or the other, different time periods, every part of India witnessed an armed resistance to colonial power. Now, obviously, since the preponderance of this stream of freedom struggle was collecting arms, ammunition, training, producing a lot of literature which needed to inspire people. They did not have probably the time to produce creative works to inspire people in the manner that probably the other stream managed to. But nonetheless, the pamphlets and the newspapers, which Malanji also mentioned, particularly of say the Kesari of Tilak or the Yugantar Patrika in Bengal or the Anushilan Samiti and Aurobindo Ghosh's writings, Barim Ghosh's writings there, Lala Lajpat Rai in Punjab, and so every part of India, there were all these profuse writings. As a historian, during the course of my research in the British Library in London, which is fortunately or unfortunately where we find most of our documents of our past, of course very meticulously archived and kept there. I had gooseflesh even now thinking of it to see one particular cabinet full of proscribed material of the revolutionary movement. This had pamphlets, booklets, illustrated booklets. There was this one beautiful imagery which never leaves my mind, which is it was an imaginary illustration which someone had done. Bharat Mata standing there and actually asking for her sons to give a sacrifice to her. And you had Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru willfully and smilingly cutting off their own head and offering it to her. And just below that, there was a huge poem of Ram Prasad Bismil. Ram Prasad Bismil, Ashfaqullah Khan, and the entire leadership of the HRA, the Hindustan Republican Association, that formed a part of this proscribed material which the British were so scared about. One thing that is very important, which we also need to mention, is that this revolutionary movement, this Sashastra Kranti, was deeply inspired and also had Hindu iconography. And we should not shame away from saying that openly, as has been unfortunately in the last several decades, that they drew from Hindu iconography immensely. The imagery of the mother goddess and also the portrayal of India as a mother, as Bankim Chandra Chattopadhyay had done in his Anand Math, or various other parts of India, whether it was Bhavani in Maharashtra and the imagery of Chhatrapati Shivaji Maharaj drawing from that divine feminine power, or Chandi in different parts of India, particularly in northern India, or Durga in Bengal. This aspect of drawing from Hindu imagery inspired the revolutionaries, irrespective of the religion that they came from. And that is something very, very noteworthy. Now, as a particular case study, since there is lack of time, I'd like to go into a case study of one particular book, which is very close to my heart, as I've written immensely about the man and also researched about him. Someone who, if he had not been a politician and an ideologue, would term as a A-rated, literature, Vinayak Damodar Savarkar, for his contribution particularly to Marathi literature. Right from his childhood, he wrote Marathi poetry, inspired by several Bhakti poets of Maharashtra.
At the same time, when he went away to London to study in the 5 years that he was there, the first task that he did was in the first 6 months of his stay in London as a law student, he translated the biography of Joseph Mazzini, the Italian revolutionary, into Marathi. And this was then sent back to India as a source of inspiration for other revolutionaries. But more importantly, what he did while he was in London was to provide this intellectual corpus to the freedom movement, to the revolutionary movement in particular. Because how is the revolutionary movement normally depicted to us in popular literature or in cinema and so on, that these were chhot-put ghatnaएं idhar udhar ghat gayi, kuch brave hearts, young men, garam khoon, so they just threw a bomb here and there, someone was assassinated and then they were hanged. But that was not how it was. They worked with a lot of coordination among themselves. They also worked with a sense of strategy. They provide the struggle, just like the Italian revolutionaries had done. Now, 2 years that he was in London, he actually studied at the British Library, used the British records to recraft, rewrite Indian history to suit Indian freedom struggle, and that is on the 1857 uprising. Till then called disparagingly as the Sepoy Mutiny, something that a few sepoys, they were upset that they were grease cartridges of pork and beef and so on, and that's why it was just a small incident, few were hanged and then it was crushed. That's how the British wanted to portray it. But Savarkar spent 2 long years getting to the archives, removing all the documents there, and wrote his magnum opus in Marathi on the 1857 and called it the First War of Indian Independence. Now, this book itself, it had a history of its own. We are in a literature festival, so it goes in the annals of world literature as the first book to be banned even before it was published. And the British were so scared, mortally scared of this man and his writings, and it warms my heart as a writer too, that the pen is mightier than the sword, that somebody who never wielded a weapon ever in his life perhaps, his pen was considered, his writings were considered so seditious, so dangerous, that the British wanted to put all kinds of pabandis and pratibandh on Savarkar and his book. There are accounts of Winston Churchill writing that this book should never come to India because they knew if it did, it's going to cause widespread uprising all over the country. But the revolutionaries devised a number of innovative techniques to bring this book to India. It was smuggled in these double boxes. There was a false bottom, the top bottom, in which they would keep some presents or some kinds of Christmas gifts and so on. And at the bottom, we would have the manuscript of the 1857 revolt, Browning pistols, arms, bomb manuals, ammunitions, smuggled to India through different customs, escaping customs and coming back to India. Now, this manuscript itself, how it got published, that is a history in itself. The manuscript was first sent to India to Sholapur, where Savarkar's elder brother Baba Rao tried to get it published. The British and Sanskrit work, it was assumed that Germany, the Devanagari script of the Marathis of the time script, so it was withdrawn from Germany. It then went all the way to Belgium, and that was where the book was finally published. Another contemporary of his, who was also a contemporary and associate of Subramanya Bharati, VVS Iyer, he translated this book of 1857 into English. And after all this journey, this book comes back to India, and it becomes a trendsetter, inspiration for revolutionaries, not only in that time period, but for several decades later. In the course of my research, I was very pleasantly surprised to read an interview of this man called Durga Das Khanna, who belonged to Punjab. He was a Congress member in the 1970s, but in his youth, he was a revolutionary. And in his interview, he says that he was interviewed by Bhagat Singh and Sukhdev Thapar to enter the HSRA, the Hindustan Socialist Republican Association.
And Bhagat Singh particularly asks him, what are the books that you read? Because they were very keen to know what shapes revolutionary's mind. And more importantly, Bhagat Singh also asked him, have you read the 57 book? So it was very evident that this book was almost like an inspiration, a Bible of sorts. Years later, and 20 years later, you had Netaji Subhash Chandra Bose and Rash Bihari Bose, who founded the Indian National Army, actually Tamil, in Japanese, and several other languages. They were found in the raids, INA raids that were conducted in different parts of the country. So the point there being, as I mentioned earlier, a man need not, or a woman need not wield her sword, but the pen that she wields, I think, is so much more powerful, because the collective power of thoughts can inspire not only your contemporaries, but can actually inspire several generations, decades and decades after a book is published. And the very fact that the British understood this and banned these books ensured that the man who wrote them, for the crime of writing such seditious literature, someone had to endure 2 life transportations in Kalapani, in cellular jail, accounting to 25 plus 25, 50 long years, one of the harshest punishments for writing something that was termed as seditious. So that was the power of literature, particularly in the Indian independence movement time. And I think during this occasion of Amrit Mahotsav, when we are celebrating 75 years, there needs to be a little more dispassionate and an unemotional assessment of what this freedom struggle is. While, as I started in my opening comments itself, while the mainstream movement, the non-violent movement, was indeed the force multiplier which brought the whole country together, the subjugation of the other stream, the parallel narratives of freedom struggle, whether it was a tribal uprising, the Sannyasi rebellion that Dr. Joshi mentioned, or the armed rebellion that was there constantly from 1857 to 1946, I think we need to look at that too. And writers and authors and historians of our era need to bring these to light too for the current generation. Thank you so much. Thank you, Shri Vikram Sakwasi. I request Honorable Bhairappa Sir, Honorable Ram Naik Ji, President Chandrasekhar Ji. Now, Nehru, Patel, and Subhash Chandra Bose are largely told, retold, and rewritten. In recent years, Giriraj Kishore has penned Pehla Givitiya on Gandhi, and I myself wrote Mahanayak on Netaji Subhash Chandra Bose. But when I think about the struggle of lesser-known patriots, poor peasants, tribals, their uprising, the great revolts in the remote hills and areas of this nation, my heart bleeds. The stories of these brave hearts are often mentioned in British record as bandits, outlaws, or migrants, though they were real freedom fighters. It is a great unending war against imperialism and slavery. In human history, the story starts from the mines of Libya. In the year 73 to 76 BC, the first fighter who held his head high was Spartacus. He taught the world what is the day of independence for a slave. When he dies, he achieves his freedom. The death of a slave is the day of emancipation. Under the yoke of British, those incidents might have scattered in far-flung areas of this great nation. But every occurrence was a part of saga, a stanza of epic, some portion of drama. When tribal communities like Kuruchia and Kuruamma rebelled against the British East India Company
in Kerala's Wayanad district in 1812. They fought with their crusading zeal, and not only the masses, but their jungle gods also participated in the battle with their symbols and songs. They made arrow blades from the iron pulled from railway bridges, so they were crushed before the sophisticated military machines of the English. M.T. Vasudevan Nair wrote a good film, namely Palasi Raja. But the great story of poor blind tribal of that era, like Talakkal Chandu, remained unwritten. Thus, in a way, Rajas and Maharajas are being honored and decorated always, but Praja remained unsung. My mind gets always attracted towards Santal rebellion that started in June 1855 against Jamindari, whose leader was Birsa Munda. He was considered as Dharti Abba, the earth father, by hilly tribes. In the same area of Ranjhakand, there was Larka rebellion, which was fought by primitive means like arrows, axes, and swords. Hardly we notice discourse of those tribal movements and uprising in literature. Mahashweta Devi penned a novel, Choti Munda and His Arrow, that was published in Bangla in 1980. She described how further generations of Birsa Munda continued that war. From 1763 to 1800, the displaced farmers were led by the sannyasis in Bengal. We find its narration in Bankim Das Anandavat. So also, there was a revolt of one Veerapandi Katto Boman in Tirunelveli, Madras province. He was hanged by the British. The uprising of Ramosi in Pune area against unemployment and poverty was another example of common man's challenge to mighty British Empire. Its staunch leader was one Umaji Naik. The British announced bounty of 10,000 rupees on his head